you are preparing for MHT CET 2026, then in this video I'll be sharing with you all the exact strategy you must use to get 99+%. Hello everyone, I'm Kaushki Gupta. I'm a second year IT engineering student and I hope that this video helps you in your preparation journey, and make sure to subscribe to my channel for more such student life kind of content, and make sure to like this video as well. My first tip is to start preparing your JEE questions. And I have said it enough, I feel, in my shorts, even in my videos. I've made a video on MHT CET 2026 strategy earlier. I think 1-2 mahina pehle ho gaya. I'll make sure to put it in the I button here somewhere. You can check that out. But yes, even now it is relevant. You have to prepare JEE questions. There is no alternative to that. क्योंकि जेई के क्वेश्चंस एज यू कैन सी आपके MHT CET 2025 में भी जेई के क्वेश्चंस आए थे. प्रिपेयर द जेई PYQs. और आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप नहीं भी कर रहे तो भी यू हैव टू प्रिपेयर फॉर PYQs. तो जेई के करने ही हैं. एंड एक्स्ट्रा कुछ जेई के जो क्वेश्चन होते हैं आप वो भी कर सकते हो. अगर आपका कोई सपोज चैप्टर है जो टफ लग रहा है आपको, along with the PYQs of JEE, आप उसके और भी थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो. बट इन माय ओपिनियन जेई के जितने भी PYQs of all the chapters which is relevant to your MHT CET syllabus, you should solve all. आप में से कितने लोग कॉलेज जाते हैं and you are trying to manage your college, your boards and CET? Let me know in the comment section below. I would like to make a video on that as well, how you can manage boards and CET, because I myself went to college मेरे 11th और 12th के लिए, तो मुझे पता है कितना hectic हो सकता है. And to manage that with your preparation and extra MHT CET करना, JEE के PYQs करना, it gets very hectic. So maybe I can try and find a solution to that. So let me know in the comment section below. But coming back to this video, if you are preparing for HSC, आपको boards तो anyways देना ही है. So instead of boards के ऊपर ज़्यादा extra time दे के, आप अपने boards का जो theory part है वो वहाँ से कर लो. एंड बोर्ड्स की जो थ्योरी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, टू राइट डाउन इन आंसर्स एंड पॉइंट्स, इट विल नॉट टेक मोर देन अ मंथ. अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, यू कैन जस्ट, यू हैव टू फ्रेम इट इन इंग्लिश. इट्स एज सिंपल एज दैट. बट येस, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगा, बट वो बोर्ड्स के टाइम आई विल गिव यू ऑल अ स्ट्रैटेजी एंड ऑल विल बी एबल टू स्कोर 85+. मैंने खुद ये यूज़ किया था, आई गॉट 88%. सो आई एम श्योर यू विल be able to get a 85+% in your 12th boards. But coming to your JEE questions and MHT CET questions, do the theory part from your boards HSC का textbook and apply them in your JEE questions. आप जो भी JEE question solve करोगे, solve it on the concept of your HSC textbook. I do agree, कुछ concepts है जो आपको extra सीखने होंगे, but that you can use in your video lectures जो आप करोगे, उसमें आप समझ पाओगे and you will eventually get a really good score. Do not ignore maths. It is so important क्योंकि MHT CET में as we all know maths सबसे ज़्यादा वेटेज का है. एंड मैथ्स ये एक तो है जो आपका इवन बोर्ड्स में भी परसेंटेज इंक्रीज करने वाला है और MHT CET में तो करने ही वाला है. एंड अगर आपका मैथ्स वीक है या मे बी मैथमेटिकली or not mathematically inclined, start practicing maths every single day. That is what I have done, and I got 98 out of 100 in my 12th boards and a 97 percentile in maths. So because I am not at all mathematically inclined, but this is something, just practicing maths every single day helped me a lot. मैं एक दिन इंटीग्रेशन वाले जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है वो करती थी, और नेक्स्ट डे जो मेरे वेक्टर्स हो गए चैप्टर्स ऐसे सारे जो है, या सेट्स टाइप ऐसे वाले टाइप्स जो चैप्टर्स है वो मैं नेक्स्ट डे करती थी. दैट्स द स्प्लिट आई यूज्ड एंड इट वर्कड रियली वेल फॉर मी. सो ट्राई दिस आउट. एंड आप जब भी ये चैप्टर करने वाले हो, after you have done solving थोड़े बहुत HSC के questions, you can start solving the JEE questions, and that will help you to increase and just be mathematical, like think like a mathematician, if that makes any sense. Just thinking कि आपको मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है, बिकॉज जेई का मैथ्स इज नॉट एट ऑल इजी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप रोज उसे प्रैक्टिस करो. स्टार्ट अर्ली एंड स्टे अहेड, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे एक कमेंट आया था, आई थिंक जस्ट अ फ्यू वीडियोज बैक, मैंने ऐसे ही कमेंट देखा, एक वेरी रिसेंट कमेंट दो कि क्या मैं अगस्त से या सितंबर से कुछ करूँ अपना प्रिपरेशन, सो विल आई बी एबल टू गेट X परसेंटाइल. डू नॉट वेट, डू नॉट थिंक कि मैं कब करूँ तो मुझे मिलेगा. जस्ट स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. आफ्टर यू आर डन वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड मेक अ प्लान एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. क्योंकि जितना तुम डिले करोगे ना, उतना ही तुम्हें ज़्यादा डिफिकल्ट होगा लेटर ऑन, क्योंकि आपको जेई के कॉन्सेप्ट्स करने हैं. अगर आप जेई नहीं देने वाले हो एंड आप वो MHT CET में यूज़ करने वाले हो उसके PYQs, बिकॉज यू हैव टू इवेंचुअली डू इट.
तो एंड मैं तो एक सजेस्ट करूँगी आप जेई के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर ही, बिकॉज यू आर यूजिंग द PYQs, तो यू कैन इवन गिव जेई एग्जाम, एंड अगर आपका अच्छा परसेंटाइल लक आ गया सो इट विल बी ग्रेट. बट जस्ट jokes apart, I am trying to say that you eventually have to put in a lot of effort. That's it for this video. I hope you found it helpful. It was a very short video, but these were a few tips जो मुझे आपको बोलने थे. And if you have any further questions related to MHT CET 2026, put it in the comment section below, or any further video ideas you can just put it down कि आपको क्या क्या difficulties आ रही हैं, and I'll make sure to make a detailed video on that and help to cater your question. All the very best and keep studying. By the way, I forgot to point out another thing. Revise every single week. It is very important. Make sure you revise. Revision is very, very important. And if you do not want to forget, जो भी आपने concepts पढ़े, please revise. It's very, very important. Bye bye.